वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान जिनको बुलाने का खास मकसद ये था कि आप लोग मुझे एक्यूजेशंस करते थे, मेरे ऊपर एक्यूजेशंस डालते थे कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को बुलाता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इसको शेकअप करते हैं और इस बार AC साहब को बुलाते हैं, वो भी लाहौर के। सो हमारे साथ मौजूद हैं आज AC मॉडल टाउन लाहौर इब्राहिम अरबाब साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि हाउ ओल्ड आर यू इब्राहिम? I just turned 29 in August. And how long have you been serving in the DMG group? It's almost been 2 years. 2 years now. Yes. And थोड़ा सा if I can understand, because I feel like कि CSS बड़ा रैंडम होता है। मैंने बड़े डिफरेंट लोगों से बात की, हर बंदे की अपनी जर्नी होती है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल, how did you sort of end up doing what you're doing today? So basically, I was in Peshawar when I grew up. My schooling was in Peshawar from Beacon House. Right. I did my O-levels over there. Right. And then I moved to Islamabad. Right. And did my A-levels in Beacon House, Margala campus. Really? What year? I think it was 2009 to 10. By the way, we were in the same school. Really? Yes, in Bani Gala. In Bani Gala, which is just the fateful batch that went. Yes, we were part of the fateful batch. That was an experience, by the way. I really like. I don't know why they moved back, but It was a different kind of experience because you had to आप वो पहाड़ों से गुजर के और सारा वो रिवर भी एक बीच में आ जाता था. So it was pretty good. बस लेते थे आप या गाड़ी पे आते थे? No, I would get a drop from my own car. Right. आपने वो experience मिस किया? हाँ, the best experience I heard was pretty great. It was. तो Beacon House के बाद where did you go? After Beacon House, I had different options. I could go abroad, but my elder brother, he was already abroad. वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में बाहर रहा है ना. Right. So I was the youngest son, so I decided to stay with my parents. Right. So I went for an external degree. अच्छा. In UCI, it's the one in F8, maybe you've heard about it. University College Islamabad. Wasn't that TILS once upon a time? Yes, TILS is the law one. Yeah. This is the business arts one. Okay. So I did that, and after that, somehow when I was growing up, it was in my mind that I should give CSS a try because I would see my dad. He already also was in the service. Acha, your dad is he retired now? He is retired, but he's still working. He's advisor to PM. So really? Yes. क्या नाम है उनका? अरबाब शहजाद. अच्छा, तो आप अरबाब शहजाद साहब के बेटे? जी. शक्ल मुझे अब जाके I can sort of see that now. Yeah. Very interesting. So what happened was that he was in the twilight of his career, end में थे बिल्कुल. He was going to retire in 2017. Yeah. So I had a chance to give the exam in 2016. So I said, why not? Yeah. It will be like the best retirement gift for him. Yeah. So fortunately, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने एक पहला attempt दे दिया and I got through. Right. So the month he retired, the next month I got into the service. Very interesting. Yeah, so very I interesting kept the story. torch alive. Yeah. A lot of pressure though, because he's a very well decorated civil servant as well. Exactly. मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी एग्जाम भी नहीं दिया था and my cousins were calling me AC साहब. You can imagine the pressure कि मैं तो यार फेल तो क्या, मैं तो किसी और से ग्रुप में भी आ गया ना तो बेइज्जती है. So that was a lot of pressure. अच्छा, जाहिर है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे वो तो इसी तरीके से उस तरह से कर रहे होंगे कि वालिद साहब का टॉर्च आपने आगे लेके जाना है. बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इस तरह की सिचुएशन में, एंड आई नो माई फादर वाज अ करियर बैंकर, एंड व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग तो उनका बड़ा ख्वाब था कि यार बेटा भी मेरा जो है ना वो बैंक ज्वाइन करे. 4 बेटे थे हम, मैं तो छोटा था तो आई वाज द ओनली वन लेफ्ट, बट आई डिडंट गो इन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई वाज जस्ट लाइक यार अगर मैंने कुछ भी किया ना ज़िंदगी में तो मुझे बैंक के अंदर लोगों ने बोलना है कि यार ये तो पर्ची है. So did you face anything of that sort? Because when your father is in the same sort of line, आप जितना भी हार्ड वर्क कर लें, I personally feel like कि लोगों ने हमेशा ये बहाना जरूर तोड़ना है कि तो इस वजह से ग्रो कर रहा है बिकॉज इसके अब्बू जी थे. Exactly. This is, I would say, one of the major struggles I've faced. Not that it affects me that much because आपको अपने आप को अगर आप अंदर अपने दिल में आप clean हो ना तो you don't really care what people say. Yeah. But when your own friends kind of gossip around and your own batchmates, शुगर में एक पॉइंट मार दिया आपने, में मार दिया ना कि अब्बू ने तो ये वो, तो you do feel कि it's unfair. Yeah. Because एक तो you're carrying the torch, the legacy for your father, and then you're facing these kind of things. So it does happen. For instance, there's a very funny story somebody made up. I won't name him or her. They said कि इसने एग्ज़ाम अपने ड्राइंग रूम में दिया है CSS का.
Imagine these kind of stories. And that is just not possible. Like that is as far away from factual reality as Yeah. you know. So this is something that I've faced, but if you're working and you don't really care what people say, I mean, right. So आपने एग्जाम दिया 2016 में 16 में, और पहले अटेम्प्ट के ऊपर आपने पास कर दिया. जी. एंड इट वाज द लीस्ट स्कोरिंग ईयर बाय द वे. अच्छा. मतलब आर्टिकल्स आना शुरू हो गए, पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम तबाह, हर 2% से नीचे. एग्जैक्टली कि सारे फेल हो गए, ये कैसे हमारा निज़ाम है, और ये पता नहीं ये ऐसे में कोई मसला है, लोगों में मसला है. तो आई वाज इन दैट ईयर. राइट. मतलब दैट वाज सच वियर्ड ईयर दैट लोग पास जो है कम हो गए थे, सीटें ज़्यादा थी. इमेजिन फॉर CSS. तो उसमें आखिर में सारे इंडक्ट हो गए थे या उसमें भी? उसमें ये था कि जो भी पास हो गए थे ना, जो भी रिटन में पास हो गए थे, सारे सबको सीट्स मिल गई. अच्छा. That never happens. Interesting. हाँ, that was an interesting year. तो उसके बाद फिर you joined, I believe you joined the, पहले तो एक ओवरऑल सिविल सर्विस एकेडमी होती है. जी. क्या what's it called, जिसमें सारे CTP Common Training Program. Yeah, and then उसके बाद DMG की specific training होती है. There's a specific DMG campus. It's on Mall Road. We spent around 9 months over there. Only the DMG guys. So Aved was here last time, and we talked a lot about specifically about his इस्लामाबाद में वो जो काम कर रहे हैं, उससे पहले वो जहाँ पे काम कर चुके हैं. थोड़ा सा अगर आप you can run me through a little bit about कि आप ग्रेजुएट करते हैं from this academy, and then you get inducted. I believe you were inducted in Hyderabad. The thing is, there is a under training program. Okay. People usually don't know about that. After you pass out from your academy, which you have to, by the way, there are exams, you have to pass all those. आपने उसमें properly पढ़ाई करनी होती है, परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तब वो आपको जाके फील्ड में जाने देते हैं. अच्छा, वरना नहीं जाने देते? नहीं, वरना वो कहते हैं नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, ये फिर से मतलब it happens. So ये भी नहीं है कि बस आपने एक दफा CSS आपने कर लिया, अब आगे जी पार्टी चल रही है. That's a huge misconception. अच्छा. You have to study in the CTP, you have to pass the exams, then you have to study in the STP, DMG वाला campus. What's it called? STP से क्या? Specialized training program. Right. So you have to pass that as well. Right. Then you go to the field as a under training AC UT जिसे कहते हैं, maybe you've heard the term. Right. Then you have to perform over there as well, because you're still bound to the academy. Right. So after 6 months, the academy decides whether you're fit to be there or not. Exactly. Whether your UT-ship is to be terminated or not. So तब तक ना you're totally on the edge. अच्छा. So people usually don't know this, but it's a long journey. Right. So after that, you get your first posting. And your first posting was in? Yes. So after my UT-ship ended, I decided to move to Hyderabad, and luckily I got the posting as ACCT Hyderabad, जो कि मैं अभी जब सोचता हूँ तो probably the best 2 years of my life that I spent there. It was a great experience. और वैसे भी आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है ना, आप किसी भी ऑफिसर से पूछें तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वो मेमोरीज बताएंगे, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर ऑन अ रिस्पॉन्सिबल सीट. तो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इज मेमोरेबल फॉर यू एंड यू रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर. तो मैं हैदराबाद में था एंड आई वाज देयर फॉर अराउंड 2 years. राइट. सो वी गोना गेट इनटू दैट इन मोर डिटेल एज वेल. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो एसी एज अ रोल, व्हाट्स द मैंडेट, व्हाट्स द जॉब डिस्क्रिप्शन एसेंशियली? बेसिकली some of our seniors, whenever they used to visit our academy, they would say everything under the sun is the AC's jurisdiction. Right. Very very Lion King yes, style. Lion King के मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं. It's not कि यार आपकी ये चीज़ें आपने करनी है और फिर आपने घर चले जाना है. You can do everything. But the basic role of ACs is basically revenue. Right. They're the sub-divisional collectors. Sub-division basically तहसील होती है. In Sindh it was called तालका. Right. So assistant commissioner is the sub-divisional collector and the head of the tehsil. Right. जो land revenues होती है ना, different kind. So land revenue is essentially selling of plots. Yes. इस तरह की जो मतलब इसमें different चीज़ें आती हैं, जैसे there is a water rate, अगर किसी ज़मीन पे पानी वगैरह प्रोवाइड हो रहा हो उसका वहाँ से कलेक्ट करना. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अभी शुरू हो गया है. Right. Then there are these different जो म्यूटेशंस वगैरह होती हैं, एक ज़मीन दूसरे बंदे के नाम हो रही है तो उसकी जो फीस वगैरह होती है, you have to collect that, you have to keep record of that, you have to मतलब उसको जमा करना. Everything happens through the AC office. Right. So that is basically the main जो job description है AC की. Right. But obviously you see AC is doing everything.
तो मोस्टली रोल ऑफ द AC इज सुपरवाइजरी इन डिफरेंट थिंग्स. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू सी हेल्थ, यू विल सी ACs घर घर जा रहे हैं, बच्चों को पोलियो पिला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डेंगू की टीम साथ है, वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं लोगों को, ये वो. तो ये सारे रोल्स भी हमारे हैं सुपरवाइजरी. वी कैन सुपरवाइज के हेल्थ वाली टीम क्या कर रही है, ठीक काम कर रही है, नहीं कर रही, कितने बच्चों को पोलियो पिलाया, कितने लोगों ने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने क्या एक्शन लिया. वी हैव टू रिपोर्ट दैट टू आवर डेप्टी कमिश्नर ऑन द तहसील लेवल बिकॉज ही इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट. राइट. अब अभी जो जनरली लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद से कुछ चीज़ों का शिफ्ट आया था, राइट. यू हैव लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक पर्टिकुलरली इन बिगर सिटीज़ आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ सॉर्ट्स बन गया है, और इस्लामाबाद में इस तरह CDA. सो मेरे लिए हमेशा ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता था फॉर एग्जाम्पल कि इस्लामाबाद में CDA का भी एक काम है, एक रोल है, और फिर ACDC एंड वो पूरी हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली लाहौर में आई बिलीव लाहौर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है या LDA है, एब्सोल्युटली. और वो LDA भी एक साइड पे है, एक साइड पे AC ऑफिस DC ऑफिस भी है. तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा, वी हैव अ सुपरवाइजरी रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स. अब जैसे LDA और CDA है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो कमर्शियल एरियाज़ होती हैं, जो अर्बन एरियाज़ होती हैं, वहाँ पे जो भी प्लानिंग होती है. लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, वो आप रोड से कितने फुट आगे बना सकते हो, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. Right. तो ये चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं. दे हैव टू अप्रूव द प्लान्स एंड एवरीथिंग. तो इट्स बेसिकली देयर डोमेन. बट ऑब्वियसली पीपल, वी आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. राइट. जो डेप्टी कमिश्नर और AC होता है, पीपल कम टू अस फॉर कंप्लेंट्स, चाहे वो जिस चीज़ का भी कंप्लेन हो, बिकॉज it's a good system, I would say. We represent the government and we are accessible to the people. तो चाहे वो CDA का हो, LDA का हो, any department का मसला हो, they come to us. Right. Then we sort those things out for them. अच्छा, tell me a little bit about so this I understand. सिंध में आपकी पोस्टिंग रही, और इस सवाल की डेप्थ में जाने की एक मेजर वजह ये है कि ग्रोइंग अप जो आपके अर्बन एरियाज थे, when they would look at let's say KP for example, तो KP seemed like this sort of mystical space जिसके बारे में आपको इतनी इंसाइट नहीं है. एंड somehow in the last decade or so KP has really sort of scaled up. चाहे वो एबटाबाद हो, चाहे टेक वैली हो, चाहे बहुत सारी डिफरेंट आपको चीज़ें अब इंसाइट मिल रही है KP से, एंड you're able to understand and sort of make an image of that in your mind. सिंध अनफॉर्चुनेटली और बलूचिस्तान दोनों वो इस स्पेस में मिसिंग है. सिंध का आप सोचते हैं आपके दिमाग में मैक्सिमम कराची आता है, कराची के अलावा इतना नहीं आता. पर्टिकुलरली जो अप नॉर्थ है, जो वो कनेक्टिविटी बड़ी उस तरह से आउट है. व्हाट वाज, सो दो सवाल होंगे प्रॉब्ली. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक इन हैदराबाद, एंड सेकेंडली हाउ डू यू सी देम or that space or area different compared to North, because I believe you've lived most of your life in Peshawar and then Islamabad. हाँ, तो कैसे आपको difference feel हुआ? Actually, your first question about my experience, it was great as not just as an AC, but generally when you go, आप एक अलग शहर में जाते हो तो आप बड़ा enjoy करते हो क्योंकि everything is different. Yeah. The culture, they are so welcoming, they are so warm कि मतलब जाते साथ ही ना एक उनका बड़ा अच्छा एक वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशन, वो आपको अजरक पहनाते हैं जहाँ भी आप जाते हैं. दे प्रेजेंट यू एन अजरक एंड टोपी. इट्स अ वेरी गुड, वेरी क्यूट काइंड ऑफ ट्रेडिशन. तो आई वुड से ना पहले हफ्ते में मेरे पास इतनी अजरकें जमा हो गई थी, मतलब मैं सोच रहा था कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर. मेरे 300-400 अजरकें मेरे कमरे में पड़ी हुई. Really? हाँ, एवरी वन वुड कम टू, इस साहब आए हैं, मुबारक हो आपको, वेलकम टू सिंध, वेलकम टू हैदराबाद, और आप हमारे मेहमान हैं, और ये वो. एवरी वन वॉज वेरी हेल्पिंग. एंड वर्क वाइज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो लेट मी टेल यू कि मैं मतलब 1% भी एफर्ट करता था ना, पीपल वुड मतलब चेरिश इट एंड अप्रिशिएट इट सो मच कि मेरा दिल करता कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ. Right. So the people were just amazing and the experience was also very good. I had very good bosses there. I had a very good team. And Hyderabad overall is a very good city. It's a developed city, by the way. People थोड़ा सा neglected है क्योंकि वो कराची के साथ है. तो लोग सारा फोकस कराची जाते हैं. कहते हैं यार कराची जाओ, हैदराबाद में क्या करना है, अगर इधर आई गए हो तो कराची जाओ. तो इट्स लाइक ए सिस्टर सिटी ऑफ कराची. राइट. लेकिन इट्स प्रॉपर, मतलब सब कुछ है वहाँ पे. देयर आर ऑल द ब्रांड्स, ऑल द रेस्टोरेंट. आई थिंक द वे दैट आई सी इट, एंड पर्टिकुलरली मैं इफ आई वर टू गो टू इस्लामाबाद से मैं कराची जाऊँ ना जहाज़ के ऊपर, तो आपको एक बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीनरी, इन टर्म्स ऑफ द
डिसकनेक्शन जब आप पंजाब के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं तो हर थोड़े थोड़े एरिया के बाद आपको कोई गाँव नज़र आ जाएगा, कोई शहर नज़र आ जाएगा, वो आपका एक GT रोड के साथ साथ आपको बड़ा कुछ आबादियाँ नज़र आ जाती हैं। जैसे ही आप सिंध जाते हैं तो यू कैन सी लाइक दिस किलोमीटर्स जस्ट कम्प्लीटली बैरन लैंड, पीपल हु आर डिसकनेक्टेड। एंड सो एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो कि बहुत ही स्टोरीज पे बेस करके एनेक्डोटल, दिस इज नॉट डेटा बैक्ड, बट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंध इज के बिकॉज as you go down south, the agriculture economy, which was conventionally the bread and butter of this country, gets reduced because of the lack of connectivity and then water issues and whatever. Exactly. तो automatically वहाँ पर impoverished communities बहुत ज़्यादा हैं और economic hardships बहुत ज़्यादा हैं, और जब economic hardships बहुत ज़्यादा होती हैं तो automatically वहाँ पर crime बढ़ जाता है, वहाँ पे corruption बढ़ जाती है, because there is scarcity of resources and because of that people try to get whatever they can get. In your experience, how did you find Sindh like in this context? क्योंकि हमने सुना बहुत ज़्यादा ही है कि डाकू, particularly हैदराबाद में तो नहीं, but आप नॉर्थ आपको सुनने को मिलता है कि यार probably अपर सिंध की साइड पे, या धारकी के my friend was serving in एंग्रो, और उसका ये था कि भाई धारकी वो कंपाउंड के अंदर रहो, बाहर निकलोगे तो डाकू आ जाएंगे, और वो जैसी कहानियाँ होती थी ना वो बिल्कुल उस तरह होता था कि बचपन में जिस तरह अली बाबा 40 चोर वाली कहानियाँ सुनने को मिलती थी। मतलब आई टेल यू, एक नेचुरल चीज़ है, आप एक रोड पे जा रहे हो, चाहे वो जहाँ भी हो, सिंध क्या वो अमेरिका में भी हो, उस पर अगर कोई आबादी ना हो तो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग रॉब्ड, आरंट देयर? राइट। तो दैट इज़ बेसिकली द इशू कि वहाँ पे ऐसे रोड्स बहुत हैं जिसपे बहुत सारे किलोमीटर्स तक कोई आबादी नहीं होती, तो उस पर हुआ करते थे किसी टाइम पे रॉबरीज, बट दे आर नॉट लाइक करंटली इस तरह का कोई इतना बैड। अच्छा, अब सेट हो गया वहाँ पर। हाँ, और डिफरेंट द मोटर वे बाय द वे इट्स नाउ कनेक्टेड टू सक्खर, मुल्तान टू सक्खर, एंड दैट्स फुली सिक्योर आई बिलीव। हाँ, इट्स फुली सिक्योर, इट्स अ प्रॉपर मोटर वे, दोनों तरफ से फेंस्ड है, तो दैट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। मतलब सक्खर इज लाइक मुल्तान से probably 5 or 6 hours now. अच्छा, you could not imagine going to सक्खर by road इससे पहले। तो इस तरह की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो उससे आई थिंक सिंध का इमेज भी बेहतर होगा, बिकॉज इमेज तभी बेहतर होगा इफ पीपल गो देयर। इफ यू ओनली लिसन टू स्टोरीज इट कैन नेवर इम्प्रूव। तो रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इवन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी शुड ट्राई कि पाकिस्तान के जितने भी डिफरेंट रिमोट एरियाज़ हैं वो रोड और रेल से कनेक्टेड हो। राइट। तो जब कनेक्टिविटी होगी तभी लोग जाएंगे, बिकॉज पीपल वांट सम काइंड ऑफ कन्वीनियंस कि वो किस तरह से वहाँ पे जाएं, क्या करें। प्लस वहाँ का ऑब्वियसली द लैंड इज़ नॉट दिस फर्टाइल, ग्रीनरी थोड़ी कम है, तो यू डोंट सी डिफरेंट विलेजेस बीच में। थोड़ा सा जब वो लैंड थोड़ी ग्रीनरी टाइप की तरफ आप चले जाते हैं ना, हैदराबाद और उससे थोड़ा ऊपर, वहाँ पे आपको आबादी ज़्यादा नज़र आएगी, इवन इफ़ यू लुक ऑन गूगल मैप्स और समथिंग। राइट। तो दैट्स नेचुरल, ऑब्वियसली वो यू कैन नॉट चेंज दैट, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ज़्यादा लोग जो हैं उस जगह को प्रेफर करेंगे रहने के लिए। एंड व्हाट अबाउट, बिकॉज अनदर अगेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई हैव ऑलवेज सीन के इस्लामाबाद के, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने टाइम ऑफ लेना है, पूरा हफ्ता बड़ा मुश्किल गुजरा है, मुझे हाफ एन आवर लगेगा, घंटा लगेगा, मैं कहीं ना कहीं किसी हिल स्टेशन चला जाऊँगा, मैं कहीं चला जाऊँगा। इवन पीपल व्हेन दे थिंक ऑफ अ वेकेशन इन पाकिस्तान दे ऑलवेज थिंक ऑफ स्कर्दू, हुंजा, दे ऑलवेज थिंक अप नॉर्थ। एग्जैक्टली। आई थिंक इट्स द वेदर। True. I think that's there, but then even in the winters when up north is closed, people would just stay at home. Like जिस तरह मुझे, अगर मैं साउथ की बात करूँ, मेरे दिमाग में आता है बहावलपुर, I think there is a lot of heritage there. मुल्तान आता है that we haven't explored. Exactly. Sindh में do you know of any areas जो आपको लगता है कि could have a lot of tourism potential but haven't been explored? There's a lot. मतलब हैदराबाद के करीब एक there's a very famous graveyard माकली के नाम से। अच्छा। You might have seen it in different videos. वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। There's a huge graveyard. Right. तो उस टाइप की जगह बहुत है वहाँ पे। Then there is Kinjer Lake over there. अच्छा। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरा पानी। मतलब अगर वो लेट्स सपोज कहीं इस्लामाबाद के करीब होता ना, तो अभी दिन रात उधर की इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लग रही होती लेकिन वो इतना दूर है कि ओनली लाइक द वेरी एंथुजियास्टिक ट्रैवलर्स एंड ब्लॉगर्स ना, जो पूरे दुनिया घूमते हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ बहुत हैं। प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर हंटिंग, फॉर सफारी। हैदराबाद के आसपास आई न्यू लॉट ऑफ पीपल दैट वर इनटू हंटिंग, जो कि प्रॉपर उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती हैं, एंड पीपल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड डिफरेंट कंट्रीज कम देयर जस्ट टू हंट डक्स का एंड डिफरेंट थिंग्स, डियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, रैबिट।
तो इस चीज़ का पोटेंशियल बहुत है. क्योंकि पाकिस्तानीज यू नो आर इंटरेस्टेड इन हंटिंग ना, बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है उनकी. तो दिस पोटेंशियल इज देयर दैट ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू गो देयर टू फाइंड आउट. यहाँ से तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अच्छा, एक सवाल मेरे पास एकदम से दिमाग पॉप किया. यू नो यू गाइज वर पार्ट ऑफ द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसेंशली, अगर मैं उस तरह से करूँ. देयर इज ए प्रोविंशियल सिस्टम एज वेल. यस. राइट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज? बिकॉज वहाँ से भी लोग इंडक्ट होके आई बिलीव एसी बन रहे होते हैं, यहाँ से भी इंडक्ट करके. I'll tell you, the only difference is that if you get inducted through the provincial system, you cannot leave the province. Okay. And if you do CSS, you are viable to go to any province across Pakistan. But that's the only difference. That's the only difference. But then why would there be two separate systems altogether? अगर तो एक फेडरल एग्जिस्ट करता है तो प्रोविंशियल की क्या रिक्वायरमेंट आई थी? आई थिंक उसकी ये है कि फेडरल सिस्टम जो है प्रॉबेबली लोगों को इतना शायद कुछ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता. दे वांट टू स्टे इन देयर ओन प्रोविंस. या दूसरा ये है कि द एग्ज़ाम इज़ कंसिडर्ड अ बिट टफर. जो CSS है वो कहते हैं यार इसमें 2% पास होते हैं. तो मतलब odds are against you or something. So let's give the provincial exam a try, which is also a very competitive exam. Right. And the officers coming out of that are brilliant. ये नहीं है कि वो CSS वालों से मतलब वो कम है या whatever. तो I think province wise every province has developed their own system ना. So I think it's they're right. एंड जो प्रोविंशियल समझने सिविल सर्विस वाले जो इंडक्ट होते हैं वो उनका जो व्हाट्स द मैक्सिमम दैट दे आर गेटिंग? दे आर एसेंशियली सेइंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, या वो जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब हैं वो CSS वाले भी हो सकते हैं? नहीं, दैट इज़ द थिंग दैट जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो CSS वाले ही होते हैं. वो CS वाले ही होते हैं. और प्रोग्रेशन थ्रू द करियर इज़ अ बिट फास्टर CSS वालों की. राइट. हमारी लेट्स सपोज व्हेन वी आर इन 17, वी आर ओनली इन 17 फॉर 3 years. अच्छा. इट्स माई सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर. If everything goes well, I will be in grade 18. Right. So उनका ऐसे नहीं होता. They have to spend a lot of years in one grade. Right. So that is the difference. Right. Otherwise the role is same. मतलब वो भी AC होते हैं, हम भी AC होते हैं, वो भी DC होते हैं, हम भी DC होते हैं. तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है. और ग्रेड 18 अगर आप इंशाल्लाह आप हो जाएंगे तो उस वक्त आप AC ही रहेंगे या कुछ चेंज आएगा? नहीं, ग्रेड 18 ACs are only in inducted in 17. अच्छा. In 18 you can be if you want to stay in the field you can be like an additional deputy commissioner, or if you go to Sindh or KP to a smaller district you can be DC as well. Right. Other than that you don't have to stay in the field. You can be deputy secretary in the secretariat, in some ministry. You can be PSO to a minister. You can, you know, different things. Right. तो वो entirely luck पे होता है या do you choose that? It is not luck. You have to try for it. अच्छा. I mean different positions होती हैं, आप फिर उस पे apply करते हैं? हाँ, apply तो नहीं, but let's suppose के there is a DC of large district who is about to who wants to leave. Right. For instance, he's going on a training. Right. Or he's going on a scholarship. So you will try, you know, all your cards कि मैं इस जगह लग जाऊँ. You will talk to your seniors. You will talk to the establishment division and all that. So there is this thing that you have to use all your sources and all your cards. Right. To get postings. But it's also on merit. ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो and आपको लगा दें वहाँ पर. आपको लगा दें कि यार हमें ये बंदा चाहिए, इसके बारे में हमें बड़ा अच्छा सुना है, इसको लगा दें. हाँ. तो it can go both ways. There is no specific कोई rules नहीं है. And generally for in terms of growth, in terms of what looks better overall in your career, field is better than desk, or do you think? Initially, you have, for instance, जब आप let's suppose 20 grade में जाओ and you're a policy maker. Right. So you make policies according to the needs of the people, right? Right. If you haven't even interacted with people, how can you make them? Right. So it's always better in the start of your career that you're in the field. So you know कि यार अब let's suppose मैं हैदराबाद की पॉलिसी बना रहा हूँ आज से 20 साल बाद. तो I'll be like यार okay, I am probably the right man because I spent 2 years right there in the middle of knowing all the problems and the nuances. Knowing all the people, all the problems. Yeah. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. So there should be a connect between, you know, the two things.
Right. I think field is very important. Makes sense. So you did 2 years in Hyderabad, and then more recently you've just been posted to the Lahore. Yes, Lahore model town. Lahore model. How is that going? It's tough, but at the same time, it's very promising because Lahore, obviously, it's a big metropolitan city, and Tehsil Model Town covers like most of the posh areas that people usually go to, like Gulbarg, Main Boulevard, Jail Road, and all these Garden Town, Purane societies. Right. Even Model Town societies probably. The ancient. I mean, my family society. moved to Lahore and they, got the जो evacuee property थी सारी उनको मिली थी. 1947, right? So Yeah. उस वक्त से वो exist करती है. हाँ, I went to the office of the Model Town Society, तो बोर्ड पे ना 1900 पता नहीं 15-16 के भी वो प्रेसिडेंट लगे हुए थे. मैंने कहा क्या बात है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो it is promising and it is tough. You have to give a lot of time to your job. I come home 7 days a week, not before 9 p.m. अच्छा. हाँ, चाहे job. So your weekends are on as well? Weekends are Is on. that like officially are they on? Yeah, it's just Basically you're a field officer ना, तो obviously मसले weekend का तो wait नहीं करेंगे. वो ये तो नहीं कहेंगे कि weekend है आज मसला नहीं करो, या कोई मसला हो जाए, कोई protest हो जाए रोड पे, या कोई कुछ भी हो जाए, there is some VIP visit, you have to fix something, you have to look after something, बारिश हो जाए, you have to see कि बारिश का पानी निकला है कि नहीं निकला, are people satisfied, काम सही हो रहा है नहीं हो रहा. तो there are no weekdays and weekends in the big metropolitan cities obviously. And how many ACs are in Lahore overall, जो Greater Lahore है? There are 5. There is 1 DC and there are 5 ACs. अच्छा, that's like I would have expected much more. Yeah, मतलब Lahore is quite huge, ना? It's Yeah. probably Islamabad के twice the size and thrice the population or maybe more. Yeah, I mean, मैंने जो last census देखा है, that's like what 16 million. Islamabad is 2 million. That's 8 times the population. Yeah. It's insane. So there is a debate to divide Lahore. They're saying कि मतलब ये this is too big for one deputy commissioner or one administration to handle. Yeah. But till it's not, though, the tehsils are quite big. They're quite vast. मतलब my tehsil starts from like you probably heard of Ichra Market. Absolutely. Very famous. It starts from there and it goes to the border of Kasur. अच्छा. It's like a huge tehsil. Yeah, and population कितनी cover होती है? मतलब the population in Model Town is probably if लाहौर की 1.5 करोड़ है तो Model Town की होगी कोई 40 लाख के करीब. अच्छा. फिर सिटी एरिया की बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो गुंजान आबादी है, ओल्ड लाहौर. तो कैंट की थोड़ी कम है क्योंकि ऑब्वियसली सारे बड़े बड़े घर हैं, एक घर में 3-4 लोग रहते होंगे. तो ये है कि मतलब इट्स अ प्रॉपर एक्सपीरियंस. प्रॉब्ली लाइक किसी और जगह में जो डिस्ट्रिक्ट होता है लाहौर में तहसील होती है. Right. So the experience is good. And Lahore overall as a city has been growing very rapidly, in the past couple of decades. Particularly कराची वाले बड़ा शो डालते हैं इसके ऊपर कि यार उनकी पॉपुलेशन हमारी ऐसे कैसे. अच्छा, कराची वाले ना देखिए वो जो अपनी ओवर पॉपुलेशन है ना उसको दिल के से लगा कर रखते हैं. वो कहते हैं कि हमारे अलावा कोई ओवर पॉपुलेटेड शहर हो नहीं सकता. So when they found out 16 million, but I do understand that as well because in the past couple of decades there's been incredible development in Lahore. उनकी Obviously people are moving there. right? ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ की internally वो population बढ़ रही है. Everybody is going there because there are opportunities in every field. मतलब आप कुछ भी देख लें, बैंकिंग, मीडिया, जॉब्स, ये क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर, कुछ भी. Industry, a lot of industry is being set up there as well. So whenever obviously rural to urban migration होती है, so that does bring with its own set of challenges, including crime, for example. Yes. Culturally, आप एक शहर का culture set करते हैं. मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूँ तो इस्लामाबाद was when it was a very small city back when. मैं बात करूँ 99, I was 8-9 years old. When there were no avenues, There was बड़े roads and they were forests. Exactly. And वो एक इस्लामाबाद था, वो एक बड़े मज़े का इस्लामाबाद था जो कि अब हमें कभी कभार ईदों पे नज़र आता है. Otherwise, there are a lot of people from all over the country who moved to Islamabad. जब लोग आते हैं, obviously it's great कि शहर grow करते हैं, लोग आते हैं, but शहर का एक अपना culture होता है जो कि constantly disturb हो रहा होता है. So how do you, as obviously urban planners, one way or the other, or urban administrators, deal with the crime, with the culture, with everything? Okay, so there is one misconception. Crime is not our domain. We're administrative officers. Crime is totally the domain of police. अच्छा. हाँ, ये I actually wanted to clear this. Usually, we get complaints about यार फलां जगह पे डकैती हो गई, एसी साहब क्या कर रहा है.
वो कत्ल हो गया इसी साहब, क्या क्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा. इट्स नॉट आवर डोमेन, इट्स टोटली पुलिस. अच्छा. तो क्राइम रिलेटेड तो हम आई कैन नॉट कमेंट एंड आई शुडंट. Right. But culturally, I think in the big cities of Pakistan, you obviously expect all the मतलब सारे लोग होंगे, वो पंजाबी होंगे, पठान भी होंगे, सिंधी भी होंगे, बलोची भी होंगे. तो they do mix at some point. ये नहीं है कि वो कहते हैं कि यार हम तो अपनी हम डेढ़ नहीं की मस्जिद बना मानते के, लाहौर को या इस तरह. हाँ, I don't think that's the case. I haven't seen इस तरह के examples कि Right. कोई cultural imbalance हुआ इस वजह से. Right. आई थिंक पाकिस्तानीज यार मिलके खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है. नहीं, वो खुश तो रहते हैं बट चलें, बियॉन्ड दैट एज वेल, you're going to be here for 2 years. Generally, how does the, sort of वो work? Our tenures are not fixed. मतलब they depend on how you perform, Right. and secondly they depend on your promotion. Let's suppose जैसे मैंने कहा, if everything goes well, तो I'll be promoted next year in October. Right. Then I'll have to leave this posting अगर मैं इस पे हुआ तब तक. Right. But generally there is no set criteria. Right. ये नहीं है कि एक बंदा लग जाए तो उसने 2 साल उधर ही रहना है. Do you believe generally overall शहरों को horizontally grow करना चाहिए या vertically grow करना चाहिए in your experience? I'll tell you that's- something about my experience when I was in Hyderabad. You see, there are different facilities, services that you need. Right. For instance, आप एक जगह पे रह रहे हो तो there has to be a water supply जो वहाँ से गुजर रहा हो. There has to be a sewerage system. There has to be a water drain. Different things. Right. तो let's suppose एक जगह पे एक टाइम पे एक घर बना हुआ, उस पे 5 लोग रह रहे हैं. ठीक है. वही ड्रेन है, वही वाटर सप्लाई है, वही रोड है, वही पार्किंग है. उसी के ऊपर अगर 10 मंजिल बन जाए हाँ. और 50 साल बाद वहाँ पे 5000 लोग रह रहे हो उसी जगह पे, हाँ. तो डोंट यू थिंक कि उसी रोड पे और उसी ड्रेन पे और उसी वाटर सप्लाई लाइन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा? 100% आएगा. एंड दैट्स हाउ दिस प्रॉब्लम स्टार्ट, दिस म्यूनसिपल प्रॉब्लम्स, कि गंदगी है, नाले बंद हैं, गटर बंद है, हाँ. पानी नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया. तो फॉर ग्रोइंग वर्टिकली यू हैव टू हैव ऑल दीज सिस्टम्स परफेक्टली प्लान्ड. Right. क्योंकि ऑब्वियसली यू प्लान देम आज एंड 20 साल बाद वहाँ पे ट्रिपल तो क्या 20 टाइम्स पाकिस्तान में पॉपुलेशन रह रही होगी. Right. तो इट्स नॉट feasible like that. You have to have proper planning. So that's why in cases of like developing countries, जो horizontal expansion है, that's more feasible. Right. Yeah. In terms of particularly DMG, what's the growth path like? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में होते हैं ना, तो आपके बड़े सारे वर्टिकल्स होते हैं. आप कहते हैं मैं इधर भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं इधर भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ. आई कैन curate my career. Do you guys have that opportunity within your line of work as well? Yeah, it's a very specific. No. The thing about DMG is the attraction. It's basically कि there is no single line of work. You can go anywhere. For instance, अभी I am in the field, I am doing different things. Field के मसले, लोगों के complaints वगैरह वगैरह. For instance, if I go to the secretariat, I can be like a deputy secretary in any ministry. अब वो मिनिस्ट्री किसी चीज़ के भी रिलेटेड हो सकती है. अच्छा. वो एजुकेशन हो सकती है, वो हेल्थ हो सकती है, वो इरिगेशन हो सकती है, वो कॉमर्स हो सकती है. तो जिस भी मिनिस्ट्री में आप जाओगे, ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो कि वो क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हमारे DMG वाले ग्रुप में. राइट. दैट्स बेसिकली द मेन अट्रैक्शन. किसी से भी आप पूछो ना कि DMG में क्यों गए या किसी और में क्यों नहीं गए, तो आपको यही जवाब देंगे कि बिकॉज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आई कैन गो एनीवेयर. Right. You can even go to like different projects, become a director of a project, run that for 2-3 years, then come back as a DC, then go to a ministry. वहाँ पे थोड़ा सा depends on your stage and your... yeah, and the stage of life you're in. Right. For instance, आपको if you need to give time to your family, you would preferably not go to the field ना, क्योंकि you're always occupied. Right. You'll say कि यार मैं ज़रा एक मिनिस्ट्री में थोड़ी सी 1-2 साल गुजार लूँ until things settle down and all that. Depends what you want. Right. There's a lot of criticism these days on civil servants जो कि Twitter इस्तेमाल कर रहे हैं. I see it every now and then on Twitter and people say कि why is there so much photo op? क्या हर वक्त तस्वीरें खींच रहे हैं या काम कर रहे हैं. मैं अपना ओपिनियन उसमें थ्रो कर देता हूँ. अगेन प्लीज़ ट्विटर मुझे कैंसिल मत करिएगा. बट पर्सनली आई थिंक I personally like it.
I like the fact that there is more insight, more जिसे कहते हैं कि मुझे पता लग रहा है कि यार अच्छा क्या क्या इनके काम होते हैं, क्या क्या हो रहा है. आई थिंक देयर इज़ अ बेटर कनेक्टिविटी पब्लिक की. I personally I think it's a very great thing. Obviously I would want to call someone in जो ज़्यादा actively criticize कर रहे होते, maybe they see something that I don't. But in your opinion, how would you sort of, obviously on you're on the other side. Yeah. On the receiving end. On the receiving end. So how do you sort of what would your comment be on that? See, the thing is, जो obviously things change ना, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सिविल सर्वेंट्स जो है जो 20 साल पहले जैसे थे वो वैसे ही रहें. Civil service are also evolved. Yeah. I mean, you can connect on the internet with so many people. Yeah. They don't have to visit you. They don't have to wait कि यार वो ऑफिस में होंगे तो हम मिलेंगे तो हम ये बात करेंगे. तो उस तरह से it's a great platform ना for complaint resolution. For instance, you can see Sir Hamza. He's always on Twitter. He's solving complaints. Yeah. And he then shows it कि ये complaint थी, ये ऐसे ऐसे हल हो गई. Right. तो आई मीन हर चीज़ के क्रिटिसिजम्स होते हैं. फोटो ऑप्स लोग कहते हैं कि मे बी सम पीपल डू दैट. ठीक है, वो इतना काम नहीं कर रहे होंगे जितनी तस्वीरें लगा रहे होंगे, बट दैट डजंट मीन कि उनको तस्वीरें लेना मना है. मतलब लोगों ने इनको ना सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता एक तंग घेरे में बंद कर दिया है कि तुम लोग ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे. राइट. आई थिंक पीपल शुड गिव थोड़ा सा स्पेस. Civil servants, because if they want to project their work, I think there's no harm. Right. आपका कौन सा बैच था? 45th. In your experience, and what's the one batch that hasn't? What's the most batch at this point in time जो retire नहीं हुआ हुआ? I think it's probably 12th or 13th common. जो कभी रिटायर, जो अभी तक हैं, जो अभी मतलब जिनके रिटायर हो रहे हैं. रिटायरमेंट इज ऑन योर probably birthday ना. कि आप 60 साल के हो जाओ तो आप रिटायर हो जाएंगे. तो इन लोगों का again no disrespect, obviously they're seniors, but how do you see the difference in the people who were part of the civil service and the newer generation? क्योंकि ये एक ओवरऑल डिफरेंस आता जा रहा है हर इसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है. मिलेनियल्स आर जनरली मोर डिसरप्टिव. जेन जी तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उनके मसाइल भी हैं, वो इम्पेशेंट से भी हैं, दे वांट टू जंप रियली फास्ट एंड वो सारा का सारा. बट उसी के साथ साथ देर ऑल्सो मच मोर कनेक्टेड with on ground situations because of the internet and वो सारा का सारा. So how do you see जो recent lot of civil service के लोग आ रहे हैं different from the ones who've been there for a long time? अच्छा, पीपल गिव अस एग्जांपल्स ना कि जो 80s में और 70s में सिविल सर्वेंट्स थे वो मतलब दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, व्हिच दे वर. दे वर वेरी थॉरो इन लॉज, इन डिफरेंट रूल्स. मतलब उन्हें हर चीज़ इतनी प्रॉपर तरीके से पता होती थी ना. दे कुड गिव अ लेक्चर ऑन एवरीथिंग एनी सेकंड. तो द डिफरेंस इज कि अब थिंग्स हैव चेंज सो मच कि यू कैन नॉट properly use those laws and those rules with everything. They don't apply to different things. क्योंकि पुराने हो गए ना. 70s में कोई बने होंगे, कोई 80s में बने होंगे. Things have changed so much कि now we have to improvise. The new lot, it has to improvise. It has to use different techniques to solve things. Secondly, what people don't realize is कि पहले जो DMG group और ये सारे होते थे ना, they were very powerful. Used to have a lot of authority. Now it is delegated to different departments, different allied departments, and to judiciary as well. तो हमारे पास अभी अथॉरिटी इतनी है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन वही है. अच्छा. तो हमने ना वो नहीं होता, कोई ना कोई जुगाड़ करके चीज़ें करनी होती हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते हम नहीं कर सकते. राइट. बिकॉज फिर तो वो वाला आ जाएगा ना वो कि वी पे योर सैलरीज एंड व्हाट नॉट. ट्विटर पे होता है. तो वी हैव टू डू इट वन वे और अनदर. Right. तो ये एक डिफरेंस है कि अभी इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. Right. प्लस मतलब पीपल कैन क्रिटिसाइज यू एनीवेयर ना. उस ज़माने में तो दे कुडंट. एक तो वो डरते बहुत थे, दूसरा उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था. अभी तो आप एक भी चीज़ गलत करो तो द नेक्स्ट डे यू विल बी ऑन द हेडलाइन. ये क्या कर दिया. तो दैट्स द डिफरेंस कि पीपल आर मोर अवेयर नाउ. So you have to be careful and you have to work harder now. Right. And in terms of the, educational backgrounds, insight, वो सारी चीज़ें, do you see a difference in the people who've been there and who are now coming in?
You know, recently the new lots, the recent 4 or 5 batches, they're all very well educated. मतलब you might have seen different stories कि यार वो बाहर से भी पढ़े हुए हैं, लम्स से बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, नस्ट से, IBA से. तो ऑब्वियसली इसका ये एक आर्गूमेंट ये भी है कि पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है जो नस्ट वाले और लम्स वाले CSS कर रहे हैं ये. तो बट सेकेंडली ये है कि CSS को फ़ायदा है इस चीज़ से, जितने वो वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड होंगे बच्चे और एक्सपोजर वाले जो बाहर भी गए होंगे, जो डिफरेंट किस्म के उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस लिया होगा, तो इट्स गुड फॉर CSS. तो आई थिंक द न्यू लॉट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड, बट आई थिंक दे जस्ट नीड टू बी ट्रेंड प्रॉपरली. जो हमारी अकेडमीज़ हैं, दे हेल्प इन दैट अ लॉट, बिकॉज सिविल सर्विस इज़ क्वाइट डिफरेंट. राइट. मतलब इसमें ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो यू कैन परफॉर्म वेल. यू हैव टू नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. राइट. तो ये 3 चीज़ें उनको सिखाना बड़ी ज़रूरी है. मेक सेंस. लाहौर के अंदर, यू नो, एज अ सिटी, ऑब्वियसली इट्स आपके पास एक ओल्ड लाहौर वाली साइड है, ठीक है. अगर मैं वैसे देखूँ ना कि कराची के अंदर जनरली आप जाते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज मिडिल क्लास, एंड सो इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज इन कराची it seems like in terms of equality, yes, there are underprivileged areas as well, but in terms of, it seems like the city is very much equal. लाहौर की ग्रोथ जितना मेरी नज़रों से गुजरी है, you see this, you know, extremely rich class जो कि आपकी DHAs में रहती है और गुलबर्ग वाली है, and then you have like these really super impoverished areas, particularly आप जब लाहौर में एंटर कर रहे होते हैं. How do you, on an administration level, how do you reconcile with this huge disparity, जो कि सिटी का एक sort of जैसे कहते हैं ना DNA का हिस्सा बन चुकी है? How would you reconcile with that? You see, in every city, ये ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एक डेवलपिंग कंट्री हो एंड एवरीवन इन द सिटी इज लाइक लिविंग द सेम काइंड ऑफ लाइफ. लेट्स सपोज आप DHA की एग्जांपल ले लें, तो मोस्टली द पीपल दैट आर लिविंग इन DHA वो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बना ही अभी है. राइट. तो दे हैव कम फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दे हैव इम्प्रूव्ड देयर सोशल मोबिलिटी और वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. राइट. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल शुड वर्क ऑन, कि उस तरफ वाले लोग जो हैं वो इस तरफ कैसे हम उनको ला सकते हैं. ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़, बट देन अगेन वर्किंग क्लास तो होती ही है. यू कैन नॉट एलिमिनेट द वर्किंग क्लास, चाहे जो भी हो जाए. देयर विल बी पीपल हु विल नीड लेबर वाले जॉब्स, देयर विल बी पीपल जो दिहाड़ियाँ करेंगे, देयर विल बी पीपल जो स्टॉल्स लगाएंगे. तो आई थिंक इट्स जस्ट हाउ इट इज़. आई थिंक मतलब आप उसमें कोशिश कर सकते हैं कि आप वो डिस्पैरिटी कम करें जो इनइक्वालिटी है, लेकिन आई डोंट सी कि इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. राइट. फॉर अ न्यू CSS एस्पिरेंट, इफ दे वर टू बी लुकिंग एट कि हमने ग्रुप्स में अप्लाई करना है, व्हाट वुड योर टॉप 3 groups be? You cannot expect me to say anything other than my own group, right? Okay, so what would be so number 1 DMZ, what would be your second or third? Second, I mean it depends. For instance, जब आप यंग होते हो, यंग लड़के होते हैं, जवान, तो उन्हें बड़ा शौक होता है ना कि मैं डंडा शंडा चलाऊँ ना रोडों पे और लोगों पे और ये वो और शशका. तो उसमें तो पुलिस, आई थिंक पुलिस हैज़ अ लॉट ऑफ रॉ पावर इनिशियली. आप ASP बनते हो, आप SP बनते हो, so you have a lot of things that you can do under your jurisdiction. और शशका भी है, obviously यूनिफॉर्म लोगों को अट्रैक्ट करता है, any uniform. तो police, I would say. And then I personally could not choose foreign service because my priorities were different. I wanted to stay with my parents. But maybe in another life I would have chosen foreign service. क्योंकि the people you meet and the exposure you have in foreign service, that's unmatched. Acha. How come? You get posted in different countries. You meet, मतलब आप grade 17 में होंगे और आप क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर के साथ बैठ के गप लगा रहे होंगे किसी कॉन्फ्रेंस में. तो इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सपोजर दैट यू हैव. आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हो, डिफरेंट जगहों पे आप रहते हो, यू मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स in different embassies. You know almost everyone in every embassy. So that's a lot of exposure. You get to these international conferences.
you do a lot of reading. There's a lot of requirement in foreign service of reading. So obviously reading helps make your personality, groom you in different ways. Right. So I would have definitely chosen foreign service. Do you think you'll go for your masters at some point? Definitely. Sorry. Masters, I would. I actually wanted to do masters after my BS, but as I told you that my father was at the end of his career, so I wanted to try it. कि क्या पता मैं उनको खुश कर लूँ retirement के बाद. Right. So I'll definitely go for masters. We have a lot of different opportunities. हमारे scholarships होते हैं different. So that also helps because recently the criteria for promotion and for different postings at the senior level, they also check your educational background कि आपने क्या क्या किया. So obviously a master degree helps. And if you were to choose I don't know major, do you have anything in mind? यार शायद मैं साइड पे जाऊँ. Probably I'll go for political science. अच्छा. And because it's relevant to our field, we deal with all these things. मतलब we can argue कि we are apolitical or whatever. Yeah. But in a system like this, you have to know all these things. Right. And you probably look for Chevening scholarships and a lot of those things exist. They're easily मतलब हमें वो opportunity easily मिल जाती है, luckily. Yeah. But probably Chevening. I'm not very fond of going to the US or the Canada or these things because जैसे मैंने बोला ना, I'm a family oriented person. Right. And even my parents wouldn't like me to go that far. Probably वो कहेंगे अच्छा चलो UK तक सही है, उसके आगे मत सोचना. So probably I'll plan when I'm in 18. So the way that the world is evolving, specialized talent अब आता जा रहा है different spaces के अंदर, industries के अंदर, and वो सारा का सारा. And what the current system does is it's like a one size fits all sort of a solution. Do you think कि जो current यानी कि जो like bureaucrats with a generic training, sure, like specialized to the tune of administration and वगैरह वगैरह, but do you think there's a requirement for specialists or maybe a new form of induction जो कि सुनने में भी आ रहा था एक ज़माने में कि एक National Executive Service वो स्टार्ट हुई है या होने के कोई इम्कानात हैं? No, it was in the planning stages, but I don't think it materialized yet. Right. So what's your thought on that? The thing is that जैसे मैंने पहले भी कहा था कि we don't have a job description, a defined one. We have to do many things. Right. So it's not probably possible to train us in everything. So they give us a general training कि ये फील्ड में एक्सपीरियंस में आहिस्ता आहिस्ता वो सीखते जाएंगे और करते जाएंगे. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू ट्रेन अस इन लेट्स सपोज एजुकेशन, तो देन वील स्पेंड आवर होल लाइफ इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री और समथिंग, क्योंकि बाकी हमें प्रॉब्ली कुछ आता नहीं होगा. बट विद द काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी रिसीव, वी आर ओपन टू लर्निंग डिफरेंट थिंग्स. वो मतलब हमें बता देते हैं कि हाउ टू बी एन ऑफिसर, how to be an administrative head, how to work, how to deal with people, how to solve issues. So we apply that in every posting that we get. So I don't think it's possible to have specialists in this field because the job description isn't defined and people expect you to do different things. Right. फिर ये होगा कि आप कहेंगे यार मुझे ये चीज़ आती ही नहीं है, मैंने तो ये चीज़ की है, मुझे ये पूछो. नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो आई अंडरस्टैंड, वहाँ पर तो आप यू प्रॉब्ली कांट गेट अ स्पेशलिस्ट इन. बट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आईटी के लिए आपको एक बंदा चाहिए, आईटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बंदा चाहिए, राइट. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी, और यहाँ पर अब हमें रिसेंट टाइम्स में ना बड़े नज़र आ रहे हैं फॉल्ट लाइंस एज वेल कि फिर वो ऑटोनमस बॉडीज़ बन रही हैं. इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, लाइक आप कोई अथॉरिटी बना देते हैं, उसमें फिर बाहर से लेकर आते हैं, फिर उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विद जैसे इन पंजाब देयर इज PITB, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, इदारा है बहुत अच्छा. इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट रन. राइट. तो probably that's something that we can work towards. कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो उसके अंदर आप एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक आप रोल्स के लिए लोगों को बुला लें, and then they can coordinate with the administrators and sure definitely. Actually the thing is we always have a supervisory role. Right. हम कभी वो nitty gritties में वो माइक्रो उसमें नहीं होते. We're always supervising. So even if there are like let's suppose हमारे under IT technicians, तो हमारा ये रोल नहीं होगा हम उसको पूछेंगे यार तुम कंप्यूटर पे ये चीज़ क्या कर रहे हो. हम बस देखेंगे उसकी ओवरऑल आउटपुट क्या है उसका. बेसिकली आउटपुट ओरिएंटेड. तो दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इट्स प्रॉब्ली नॉट फीजिबल कि आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट लाओ, बिकॉज उनका जो वो लिमिट है ना, वो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा उस तरह से.
Right. I have a couple of questions. We're almost at the 1 hour mark. In terms of your particular group, who are some of the hero names? होता है ना हर कंपनीज में होता है कि कोई हीरो नेम होता है कि यार वो एक बंदा था हमारी कंपनी में जिसने कमाल दुनिया बदल दिया आकर. तो आप लोगों का कोई इस तरह होता है कि दिस दैट पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट look at how he sort of obviously जैसे आपने कहा था the golden days, the 80s and the 70s and the 90s, उन दिनों के bureaucrats are मतलब we all look up to them. Any particular names that generally are considered as gold class supermans of the PAS? Would you blame me if I name my father? Not at all. I think we'll put that one there, and then maybe a couple of other names. I mean, recently, if you look at the bureaucracy, so Hamza Shafqat is a very good example. Right. Because he's, reorienting the role of the DC. Right. मतलब अगर किसी ने सीखना हो ना तो वो उनसे सीखे कि वो कैसे काम कर रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो कीपिंग इट ऑन मतलब अपना इमेज उन्होंने इतना अच्छा रखा हुआ है और दूसरी साइड पे वो परफॉर्म भी कर रहे हैं. ये नहीं है कि इज़ ओनली डूइंग द ऑप्टिक्स एंड द फोटो सेशंस एंड व्हाट नॉट. तो ही इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल आई थिंक. राइट. For me and for all the upcoming batches, he's a very good role model and they look up to him. Right. And उसके अलावा the senior bureaucrats that we've had, they've been very exemplary. अभी मेरे माइंड में ऐसा सच कोई आ नहीं रहा. कामरान लशारी साहब आपके उसके थे ग्रुप के थे? Yes, he was in DMV. Because I remember when he was in Islamabad, he transformed Islamabad. The city. Yeah, he's now head of the Lahore Walled City Authority. He's doing a very good job. Yeah. अच्छा. वहाँ पे वॉल्ड सिटी का एक अलग वो बना है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए. बिल्कुल. So that was all his initiative and his idea. Right. So he's in Lahore. Right. And I'm in Lahore too, so we sometimes do get a chance to interact. So he's a very good example. Thank you. Yeah. So there are a lot of people that we look up to, but obviously जैसे मैंने कहा कि things have changed. Yeah. They cannot teach you how to work now. They cannot tell you कि यार इस तरह काम करो, क्योंकि उनके टाइम पे डिफरेंट था, अब डिफरेंट है. वी हैव टू इम्प्रोवाइज. राइट. वी हैव टू यूज आवर ओन माइंड इन द वर्क. उनका सुन के तो ठीक है, they can tell us about principles, they can tell us about dedication, about hard work, but how to do the job we have to figure it out. I think it's very grandfather rule sort of ना कि बेटा ये फलसफा exactly. मतलब आप जितने भी लोगों के लेक्चर सुनो ना, you cannot learn unless you apply yourself on your work in the field. आप खुद सीखते हो. मेरा ये मानना है. Maybe I am wrong. अच्छा, एक I'd like to ask a question. And again, this stems from the same critique that comes on Twitter, कि ये optics हैं और ये सारा का सारा है. And the word that's generally, associated with you guys is civil servants. पाकिस्तान में servant की connotation भी एक ऐसी है ना कि अजीब व गरीब दिमाग में वो आता है. But probably the question that I'd have is, do civil servants really serve? That's a good question. I would like to clarify that to people because I know कि there is हमारा एक image ऐसा बन गया है कि people think कि हम सिर्फ ऐश करते हैं. Maybe you've heard that too. Yeah, that's growing up, that's all I've heard. Yeah. But that's not the case. For instance, I am a civil servant, right? And I wake up in the morning and I have to check different teams related to health every day. If I don't, I get reprimanded by my boss. Right. That starts in the morning. उसके बाद I have to do the price control. We're price control magistrate. By the way, I forgot to mention that in the basic role of the ACs, we have to check the prices of essential items. Right. So we have to do that on a daily basis. ये नहीं है कि यार मेरा मूड नहीं है, जाओ कुछ नहीं करना. Then we have to, आजकल जो कोरोना है, it has reoriented our role. Right. We are like in charge of the vaccination centers and the different the vaccination campaign as well. Right. And the COVID SOPs, you have to make sure everybody follows that. So all these roles combined, we do that on a daily basis. And you can say probably 12 to 14 hours a day. Every civil servant works, no matter where he's posted. Right. If he doesn't do that, he will be transferred or he will have a bad ACR from his senior. So the question that civil servants, do they serve? They actually serve a lot. Achha. More than people can expect. Right. Yeah. And, I'm going to move from here to the last question that I generally ask everyone. You're 29 years old right now. Yes. You're going to be 59, probably 1 year away from your
Retirement. Yeah, retirement in 2050, right? So you're looking at a retirement in somewhere in 2051, I believe. ज़ाहिर है कि आपने चूज़ अब ये कर ही लिया कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, मैंने फैमिली के पास रहना है, और सिविल सर्विस है तो आप बाहर तो नहीं जा सकते. सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान, around about the time of your retirement? That's an interesting one. Because I'll also be in the twilight of my career, probably in some ministry, in a policy-making role. In 2050, I wish Pakistan has left behind अभी के जो उसके मसाइल हैं, मतलब related to our neighbors, especially. Because Pakistan is unfortunate given its geographical location, ना. हमेशा इशू होता है यार, अफगानिस्तान में अनरेस्ट है तो पाकिस्तान तबाह हो गया. इंडिया से ताल्लुक़ ख़राब है, पाकिस्तान तबाह हो गया. ईरान में मसला है, पाकिस्तान तबाह हो गया. तो I hope Pakistan has settled all its issues with its neighbors by then. And it's prospering economically, because economy is the most important thing ना. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है. And there is stability. कोई इस तरह के ये टेररिज्म वाले इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल दिस शुड बी द थिंग ऑफ द पास्ट इन 50s, एंड वी शुड हैव अ प्रॉस्परिंग इकोनॉमी, एंड प्लस ऑल आवर प्रोविंसेस शुड बी वेल कनेक्टेड. मेरे ख्याल में जितने भी हमारे सूबे हैं ना, जो अभी जिनको आप सुनते हैं कि थोड़े नेग्लेक्टेड हैं, एंड द पीपल आर देयर डिफरेंट अपराइजिंग्स और यू हेयर दीज थिंग्स, सो वी आर पास दीज थिंग्स. मेरे ख्याल में हमें तब तक डेफिनेटली इन चीज़ों के वो पार कर लेना चाहिए, एंड वी शुड हैव अ प्रॉस्परिंग इकोनॉमी, एंड ऑल द प्रोविंसेस, ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड फील दैट they're one and nobody is neglected, they're all treated same. 100%. Ibrahim, thank you so much for coming in for this very insightful session. I wish you all the very best for taking care of Lahore, and I'll do my best. And thank you so much for your service. Thank you for having me. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई अपने दोस्तों ने जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट के लोगों से हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. यहाँ पे कहीं पे इजी पैसा जायज़ कैश आ रहा है. You can support the channel as well if you want. We accept anything from ₹1 to however much you want. It's the thought that counts. But ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले TBD कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, डिफरेंट कन्वर्सेशंस करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, so you can join that as well. But anyways, this was Sigma Zamil Hassan Zaidi. You were watching Thought Brand Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.